आज 10th अप्रैल है and we are just 50 days out from our exams. Just 50 days. Hello. Yes. So it's 3 a.m. now and I wish मैं सो जाता but instead of sleeping, I'm here. I picked my phone up to Google out a doubt, but what I ended up doing is watching reels and scrolling. आज 10th अप्रैल है and we are just 50 days out from our exams. Just 50 days. And honestly telling you, I don't know how to say it, but I'll say it anyway. I literally feel like I have did nothing in past 3 months. मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ 3 महीने पहले खड़ा था. I have did nothing. And the worst part is, I got 0 last time in CFM and I haven't touched it yet. मैंने उसे लिटरली छुआ भी नहीं है. And I really feel like कि पिछली बार 0 आया, इस बार हो सकता है 10, 12 या 15 नंबर आ जाएंगे. बट उससे ज़्यादा नहीं. मैंने मेहनत नहीं की है CFM में एंड इट जस्ट 50 days आउट एंड आई हैव फ्रीक्ड आउट टुडे. आज फाइनली जाके मुझे ये फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है कि डैम फक व्हाट हैव आई डिड, व्हाट वर आई एक्चुअली डूइंग, एंड इट रियली सक्स एंड आई हैव नो आंसर फॉर इट. बट all I'll do today is share the honest and brutal things with you. What all mistakes I have made in my past and I really wish कि आप सब वो मिस्टेक्स ना करो. और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं ये सारी मिस्टेक्स अब दोबारा ना करूँ क्योंकि अब सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं एंड इन 50 days में वी एक्चुअली हैव टू एस इट. बिकॉज इफ आई फेल दिस टाइम मैं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा. I'm literally telling I have really great grade on 3 other subjects, but CFM, when it comes to CFM, it really sucks to me because I'm really weak at accounting. And the great Murphy's Law says it, कि जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है एक्चुअली में हमारे साथ वही होती है. एंड क्योंकि मुझे CSM से डर लग रहा है, इट्स हाई टाइम व्हेन आई एक्चुअली हैव टू ब्रेस माई सेल्फ टू फेस इट एंड आई कैन नॉट रन आउट ऑफ इट नाउ. अब मैं और भाग नहीं सकता एंड आई हैव टू क्रैक द CFM थिंग एनी वे. मर के, रो के, जी के, हार के, बट आई हैव टू डू इट. एंड आई रियली फील लाइक हम सबके जीवन में, मतलब maybe I'm good at theory part, maybe you are not good at theory part. हो सकता है you are really good at CFM, but maybe JIL or company law sucks to you. And it can be vice versa to any other person. All of us are struggling at some point, but we cannot run out of it. I'm really telling you, I wish मैं BBA, MBA किसी भी अच्छे कॉलेज से कर सकता था and would have enjoyed my journey throughout my college journey very peacefully, enjoying making friend memories and creativity, adventure, would have done all of it. But what I'm doing is company secretary and I have chosen it. Like I have picked it up that I want to be a company secretary. It's my dream and I cannot let my dream get shattered because this fucking thing hits me hard. CAFM. I'm not doing good at CFM. I'm literally not doing good at CFM. But what to do now? अच्छा, बिफोर आई टेल यू व्हाट टू डू नाउ, मैं एक गलती बताऊँ, एक मिस्टेक जो मैंने की December 24 में, एंड ट्रस्ट मी 70% ऑफ ऑल CS एस्पिरेंट्स आर डूइंग इट. एंड वो ये है कि वी हैव फोमो, वी हैव फियर ऑफ मिसिंग आउट. एंड ये फियर ना, इट एक्चुअली सक्स. मतलब लेट मी टेल यू कि मैं कभी वो बच्चा नहीं था जो बहुत ज़्यादा नर्ड था, या मुझे पढ़ाई से प्यार नहीं है, मुझे पढ़ के खुशी नहीं मिलती है. मैं पढ़ रहा हूँ टू अकम्प्लिश अ गोल, टू अचीव माई ड्रीम, एंड पढ़ाई इज a path जो मुझे वहां तक लेके जाएगी. So what I used to do and even I have did in past 3 months which I really regret is कि मैं बैलेंस करने की बहुत कोशिश करता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं बैलेंस करूँ, मैं दोस्तों के साथ ट्रिप भी मारूँ, मैं एडवेंचर भी करूँ, मैं मेमोरीज भी बनाऊँ और मैं पढ़ाई भी करूँ. और इस प्रोसेस में ना मैं हर चीज़ कर जाता हूँ, बट what I don't do is study. द मेन थिंग जो पढ़ाई है मैं वो छोड़ के हर चीज़ कर रहा हूँ. मैं रोज़ नई मेमोरीज बना रहा हूँ, मैं रोज़ नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, मैं एडवेंचर कर रहा हूँ, मैं फन कर रहा हूँ दोस्तों के साथ, मैं बहुत ज़्यादा मैं खाना बना रहा हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी. बट द मेन थिंग इज स्टडी. दैट्स व्हाट आई एम नॉट डूइंग. एंड इवन इफ आई एम स्टडिंग और व्हेन आई एम स्टडिंग, आई स्टडी व्हाट आई ऑलरेडी नो. JIL कंपनी लॉ SPLN मुझे बहुत अच्छे से आता है एंड आई हैव रियली ग्रेट ग्रिप ऑन इट. एंड मैं यही पढ़ता हूँ. क्यों ये पढ़ता हूँ? बिकॉज इट्स ईजी. What is hard? Hard is CFM. And what I'm doing? Running out of CFM. Running away from CFM. Is this what I'm supposed to do? Is this what I'm actually supposed to do? I am sure this kind of behavior will not take me out to be a CS one day. And the dream of becoming CS actually haunts me. I have a fear. I have fear that I'll fail again. The fear of failing out again. And since I have been accountable to my audience, to a family that I have online
on YouTube. I'm accountable to you. Maybe there are students out who actually look up to me that, okay, this guy will make it someday. And what I'm actually doing is wasting my time up. I don't know what to say, but the spark of making it happen is missing in me. And let's come to what to do now. So I have no answer to it. I actually have no answer to it. I don't know what to do now, but all I know is I just have 50 days. 50 days of sacrifices. I won't be balancing anymore. I won't be balancing anymore. I am not anymore going to house parties, cooking my own food, hitting gym, making memories. What I'll do is just study. 50 days of sacrifices. 50 days of making it happen. Like, just do it, do it, do it, do it happy, do it sad, do it alive, do it dead, but I am gonna do it in next 50 days. And I am ready for it. CAFM is my weakness. Maybe तुम्हारी कुछ और weakness होगी. So I am ready. I have braced myself enough to make it. Are you ready for it? CS is, to me, CS is not a course. It's actually a journey. It's a journey, a roller coaster of things, happy moments and sad and the lows. And this is what my low is. Today I have actually cracked it and made myself realize कि Mayank, you are not here to do this. You are not here to adventure, to make memories, to have fun, but to actually struggle and make your life ahead happy and successful. And I don't really feel कि अगर मैं ऐसे चलता रहा, I'll be successful any day. And this is what a reality check I am giving to myself. I am ready. I have braced myself to make it. And I wish कि हम सब एक साथ ready हैं. So let's just grind together. Let's just rise together. Because this is a journey and we are a family. We are a family online and we all are aspirants. I don't know what will I do, but yes, I'll surely make it. And I really need guidance from the one who have passed it, and maybe the one who are actually on their way to pass it. Please suggest me what shall I do with CAFM. It's just 50 days and I really want to wind up the syllabus good enough that I manage to pass. All I want to do in CAFM is manage to pass. So now if you have came so far, subscribe me and join me in my journey for next 50 days. And for next 50 days I'll be uploading 50 videos each day towards my accomplishment, my failure, and what I have did in my entire day. 50 vlogs are ahead, upcoming, so stay tuned and do remember, all of us are together in this. Bye.